हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिकोपॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी। अगर आप भी सोच रहे हो एग्जाम में एनाटॉमी से क्या आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेक्शन 1, अपर लिम्ब। फर्स्ट, brachial plexus, its formation, branches and applied anatomy. Second, blood supply and venous drainage of upper limb. Third, anatomy of axilla and its content. Fourth, shoulder joint, its ligament, movement and applied anatomy. Fifth, rotator cuff muscle and their clinical importance. Sixth, cubital fossa, its boundaries and content. Seventh, anatomy of carpal tunnel and carpal tunnel syndrome. Eighth, blood supply and nerve supply of the hand. Ninth, anatomical snub box, its boundaries and applied importance. 10th, clavipectoral fascia and its relation. Now section 2, lower limb. Lumbar plexus, formation and its branches, anatomy of femoral triangle, hip joint, knee joint, sciatic nerve, popliteal fossa, arch of foot, its type and applied anatomy, venous drainage of lower limb and varicose vein, then anatomy of adductor canal, and last is muscle of gluteal region and their nerve supply. Section 3rd, head, neck and face. First is facial nerve, its courses, branches and applied anatomy. Then trigeminal nerve, division and applied importance. 23 is parotid gland, anatomy and applied anatomy. Thyroid gland, its blood supply and applied anatomy. Then larynx, its cartilage, muscle and applied anatomy. Pharynx, anatomy and applied aspect. Then scalp, its layer and surgical importance. Then muscle of the mastication, its nerve supply and action. Then tongue, blood supply, nerve supply and applied importance. And last is anatomy of cervical lymph node. नेक्स्ट सेक्शन इज ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड अप्लाइड एनाटॉमी, वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड सीएसएफ सर्कुलेशन, देन सर्कल ऑफ विलाइज एंड अप्लाइड एनाटॉमी, क्रेनियल नर्व्स, इट्स न्यूक्लियाई एंड अप्लाइड इंपॉर्टेंस, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, cerebellum anatomy and its function, basal ganglia anatomy, internal capsule parts and clinical significance, then spinal cord, blood supply and tract, and last is brain stem, its importance, nuclei and function. Section 5, thorax. First is anatomy of pericardium and applied anatomy, chamber of heart, then coronary circulation and applied importance, then lungs, its lobes, fissures and bronchopulmonary segment, and last is mediastinum, its division and important content. Section 6, abdomen and pelvis. There are important organs that you have to read, that is stomach, liver, spleen, kidney and pelvic diaphragm. These are the most asked questions in anatomy paper. So friends, ये थे एनाटॉमी के 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन पर बार बार एग्जाम में फोकस किया जाता है। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो एनाटॉमी में अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेडिको पॉइंट और DM for notes only on Instagram. Thank you for watching and all the best for your exam.